20. आकाशवाणी ले आया फिर से आपके लिए क्रिकेट का रोमांच। भारत और इंग्लैंड क्रिकेट श्रृंखला के सभी एक दिवसीय मैचों का प्रसारण दोपहर Yadav all the opportunities to score, to show his prowess, to show his. It was almost as if he was standing at the other end of the wicket and reading a CV, a resume from young Yadav, and say, okay, fine, I think you're pretty much okay. You passed this test. I think we could take you on for a job in the Indian team. So it was almost like he was reading his resume, from the other end. I think it was a captain in the middle trying to judge and work out what he would do in the future. Jaya, it was not just the captain but also the vice captain, क्योंकि जो ओपनिंग पार्टनरशिप रही है 94 रन की 9 ओवर में 10 के रन रेट से उन्होंने रन बनाए और दोनों ने अच्छे से खेला, आदिल रशीद को भी, जोफ्रा आर्चर को भी, मार्कवुड को भी। और जो एक स्टैंड आउट फीचर रहा शायद कि वो शॉर्ट बॉलिंग के नीचे घुसकर दोनों ने छक्के लगाए, लेग साइड बाउंड्री को दोनों ने टारगेट किया। आपने उस पार्टनरशिप के बारे में क्या सोचा? आई थिंक जो आप बात बोल रहे हैं लेग साइड बाउंड्री को टारगेट किया, दैट वाज फॉर द स्लोअर डिलीवरीज एंड दैट वाज द मेन वेपन फॉर द इंडियन पेस अटैक। बट आज वो उस अटैक को, उस वेपन को इतना अच्छे से यूजफुल नहीं बना पाए जितना कि भारतीय बल्लेबाजों ने उसका यूज़ किया। सो आई थिंक दैट वाज समथिंग जो कि एक स्ट्रैटेजी के तहत था कहीं, जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे और दे कुड रीड द बॉल। जो स्लोअर बॉल्स थी बहुत अच्छे से पिक की दोनों बैट्समैन ने और बेहतरीन साझेदारी वहाँ पे। स्वामी, बात हो रही थी इस सीरीज़ में, हमेशा से ये बात रही है, शुरू में भी हुई थी कि फ्रीली खेलेंगे इंडियन बैट्समैन जो, और आज भी शुरू में जब टॉस हुआ तो विराट ने कहा कि वी विल पुट अ गुड टोटल, a huge total and try to defend it. जो उनका एक concern रहा है, have we addressed that concern? Oh, fairly. I mean, when you put on 224 runs, out there,
in 20 overs. I'm waiting for that. I hope I'm alive to see that. A situation where you have 120 deliveries and 120 sixes, boundaries, because ultimately this game is going to come to that. I think it was hitting at its best, and actually quality hitting. It wasn't as if it was mindless hitting. So I think these guys are using every single delivery as much as possible, and delivering good scores at that. You 224 in 20 overs. I shudder to think what they would do if we played say 60 over cricket like we did in the first World Cup ages ago. Maybe 800 runs, maybe 700 runs, you never know. Give me a break. Bowlers will run away from cricket. They'll probably use bowling machines. Jaya, no question, एक सवाल पहले आया था कि विराट कोहली को क्या कंटिन्यू करना चाहिए ओपनिंग के लिए. स्वामी ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ आज के लिए है, एक्सपेरिमेंटल है. आप क्या सोचते हैं कि ये एक मूव परमानेंट हो सकती है शायद आगे जाके? वेल आई थिंक अगर हम सिनेरियो देखें तो केएल राहुल अगर जल्दी आउट होते हैं, विराट कोहली इज वॉकिंग आउट एट नंबर 3, ही वाज एज गुड एज वॉकिंग आउट एज एन ओपनर ओनली because KL Rahul was getting out early. So I think it's probably because he's coming at number 3, and number 3 is kind of a player who's the backbone of the team. So I can see that अगर इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन चाहते हैं जहाँ पे वो एक और bowling ऑलराउंडर फिट इन कर सकते हैं, then I think it's all about the team combination. Swami, we've made a huge score, but we have to defend it. And batting second, how easy or difficult would it be for England? Kanishka, before I go, I just want to... I had a small bit of a rethink, about what Chetan asked Jaya just to say. Kohli, we all know that Kohli is the best batsman in the team. And I think Kohli also knows that he's the best batsman in the team, even though Rohit is there. If Kohli is going to go out to open the innings like Sachin used to once upon a time, and if he gives himself all the chances, and if he's going to stay right through those 20 overs, and on a day when he's going to be at his aggressive best, I shudder to think he could be as devastating as Rohit Sharma. So if you have a Rohit Sharma and you have say Virat Kohli in full swing, in full flow, it would almost be like Sanat Jayasuriya and Ramesh Kallu with Rana. They could decimate any attack in T20 in one day cricket, and in T20 it becomes even more devastating. So you never know what is taking in this man's mind. Virat Kohli is a guy who is constantly thinking, obsessed with the game that he loves so much and he's so good at. I think you never know. I might be thinking that he is actually looking at other options like Yadav or Ishan Kishan or something, but maybe he's even looking at an option in himself to see if he can bat through those 20 overs along with Rohit Sharma and never need another batsman, have 6 bowlers, pack it up with good quality guys and knock the hell out of everyone else. हाँ, और बस जाने से पहले यही सवाल हमको करना है कि 224, 225 चाहिए इंग्लैंड को. कनिष्का ने भी यही सवाल पूछा था और यही सवाल दोबारा रखते हैं. भारत को क्या करना होगा, क्योंकि इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो भी काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी शार्प है. सिंपल है, विकेटें लेनी होगी जी. लेकिन ये विकेट काफ़ी अच्छी खेल रही है. बट yes, it will not be easy for England, and अभी जॉब डन नहीं हुआ है इंडिया के लिए भी. So I think they will have to keep finding their way through the batting order of England, and partnerships build नहीं होने देनी चाहिए इंग्लैंड के पार्ट पे. स्वामी? Certainly, 224 is no mean task, 225 to win. I think that's going to be one Herculean task, no matter what kind of a wicket it is. When you are trying to chase that kind of a total, it's always huge pressure. You can't afford to lose any wicket, and nor can you afford to waste any single delivery. तो ये था हमारा प्रोग्राम फ्री हिट 2020. छोटा सा समय लेकिन बहुत सारी बातें करने के लिए थी, और बातें जारी भी रहेंगी हमारी कमेंट्री के साथ, और पोस्ट मैच के बाद देखेंगे ये सीरीज कौन जीता है. फिलहाल के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट्स का, जया शर्मा फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वी कृष्ण स्वामी, और मेरी को एंकर कनिष्का त्यागी का. मैं चेतन नरूला आपसे विदा लेता हूँ फ्री हिट 2020 से. Free Hit